Good morning everyone. Myself Dr. Ravi Keshri. In previous section I have discussed the nervous system and today I am discussed the neuron. What is neuron? The nervous system, it is made up of the specialized cells and this specialized cells is called the neurons. Here is the cell, just the normal cell have the cytoplasm, the cell membranes and different cell organelles are also present in the cell. Here is in the nervous system. The cells are the specialized cells. The specialized cells that constitute the functional unit of the nervous system is called the neurons. They are called neurons. The neurons are the specialized cells that constitute the functional unit of the nervous system, that is called the neurons. Now the neuroglia. What is neuroglia? These are the supporting cells. Neuroglia are supporting cells and these supporting cells are the oligodendrocytes, the Schwann cells. These oligodendrocytes and the Schwann cells, these are the supporting cells and these supporting cells form the myelin sheath. Here is the myelin sheath and this myelin sheath, it is made up of the oligodendrocytes and the Schwann cells. In the oligodendrocytes, it forms the supporting cells in case of the central nervous system and the Schwann cells in case of the peripheral nervous system. Here is the neuron cells, these are the dendrites and here is the axon and these are the myelin sheath and here is the cytoplasm. Here is the Nissen's granules are also present in the cytoplasm. The Nissen's granules are also present. Nissen's granules are also present, the myelin sheath and the axon and the supporting cells. Just like bridge, अगर कोई ब्रिज हो, ये ब्रिज हम लोग बनाते हैं तो ब्रिज में क्या करना है, पिलर देना है. पिलर अगर नहीं देते हैं तो क्या होगा, ये ब्रिज फॉल कर जाएगा. तो इस तरह से यहाँ पर क्यों पिलर सपोर्ट किए हुए हैं. इसी तरह से नर्वस सिस्टम में भी क्या होता है, वहाँ पर भी सपोर्टिंग सेल्स होते हैं. तो सपोर्टिंग सेल्स जो क्या करेंगे, सपोर्ट करते हैं. जैसे ब्रिज को पिलर सपोर्ट करता है तो इसी तरह से न्यूरॉन्स पे जो सेल्स होते हैं वहाँ पर सपोर्टिंग सेल्स होते हैं एंड दैट सपोर्टिंग सेल्स इज कॉल्ड द न्यूरोग्लिया. न्यूरोग्लिया एंड न्यूरॉन्स जो होते हैं हमारे नर्वस सिस्टम में, न्यूरॉन्स के जो सेल्स होते हैं वो काफ़ी संख्या में होते हैं. मोर देन 1 ट्रिलियन in the human brain. The numbers of neurons are more than 1 trillion. एंड न्यूरॉन्स क्या होते हैं, न्यूरॉन्स से प्रोसेस निकलते हैं, डेंड्राइट्स निकलते हैं और क्या निकलते हैं, एक्सॉन्स निकलते हैं. डेंड्राइट्स निकलते हैं और एक्सॉन्स निकलते हैं. तो ये समझ लीजिए हमारा एक्सॉन है और इसको हम लोग अगर साइटोप्लाज्म समझते हैं, न्यूरॉन्स के जो सेल बॉडी समझते हैं तो सेल बॉडी से क्या होते हैं, ये सारे डेंड्राइट्स हैं. दीज आर द डेंड्राइट्स एंड दिस इज द एक्सॉन एंड दिस इज द एक्सॉन. और इसके एक्सॉन पर क्या होते हैं, सपोर्टिंग सेल्स होते हैं. इस तरह से सपोर्टिंग सेल्स जो इसके चारों ओर माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करते हैं, सपोर्टिंग सेल्स एंड दिस सपोर्टिंग सेल्स आर ओलाइगोडेंड्रोसाइट एंड द Schwann सेल्स. नाउ ये एक्सॉन्स हो गए न्यूरॉन से और डेंड्राइट्स निकल गए. तो ये एक्सॉन्स और डेंड्राइट क्या करते हैं, ये नर्व फाइबर बनाते हैं. तो व्हाट इज नर्व फाइबर, इट इज मेड अप ऑफ एक्सॉन्स एंड डेंड्राइट्स. और ये नर्व फाइबर क्या करते हैं, ये नर्व फाइबर जो है वो बनाते हैं नर्व ट्रैक्ट. द ट्रैक्ट्स दैट इज द असेंडिंग ट्रैक्ट एंड द डिसेंडिंग ट्रैक्ट, द कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट एंड द टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट. फ्रॉम द टेक्टम दैट इज द पार्ट ऑफ द मिड ब्रेन एंड towards the spinal cord, that is the tectospinal tract, and the descending tract, that is the corticospinal tract. From the cerebral cortex towards the spinal cord, these are the nerve fibers and the nerve tract, that is the ascending tract and the descending tract. Now in the structure of the neurons, the cell body is present. The cell body, that it is also called the perikaryon and also soma. Second is the cytoplasm. Third is the Nissen's substance. Nissen's substance or Nissen's granules are also present. Neurofibrils are also present and the granules, pigment granules are also present in the neurons. These are the 5 things which are present in the structure of the neurons. Now the cell body or perikaryon or the soma. What is this cell body? It is a mass of cytoplasm surrounded by the cell membrane. The mass of cytoplasm surrounded by the cell membrane.
mass of cytoplasm surrounded by the cell membrane, and it is also called the perikaryon or soma. Now the cytoplasm. In the cytoplasm, just like in the normal cells, the cell organelles are present, the mitochondria is present, the Golgi complex is present. Here are the also the cell organelles, the nucleus is present, the nucleus is present, nucleolus is present, endoplasmic reticulum is also present. But the very important thing, the centriole is also present here in the cytoplasm. The centriole. Third is the Nissel's substance, also called the Nissel's granules, are also present in the cytoplasm of the neuron. And in the electron microscope, this Nissel's substance is composed of the rough endoplasmic reticulum. The rough endoplasmic reticulum, it means the ribosome is present and the protein synthesis also occur, which forms the building block and mechanical support to our body. Now the neurofibril. Neurofibril in the electron microscope, we see that it is made up of the microfilament and the microtubules and the pigment granules. Pigment granules, just like in the skin, on our skin, the melanin pigment is present. Here is the neuromelanin. Neuromelanin, because it is the nervous system. So the neuromelanin in the neurons of the substantia nigra, this neuromelanin is present. This is all the structure of the neuron. In the next video, I will discuss the axons and the dendrites. Thank you.